बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 5 रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वाई द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज़ मेड हेवी एट द रिम। मतलब इंजन का जो फ्लाई व्हील होता है रिम पे उसको क्यों हैवी बनाया जाता है। इसका आंसर है टू मेक द मोमेंट ऑफ inertia flywheel large it is made heavy in the rim. To put the flywheel in motion we have to apply torque in it. अब मैथमेटिकली हम जानते हैं कि ठा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। यहाँ पे ठा टार्क को शो करता है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बराबर है एम आर स्क्वायर, और अल्फ़ा है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास आ गया टा डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। अब हम जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कम होता है उतना ही टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करने से एंगुलर एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। द ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर विल बी द एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। सो नो व्हेन इंजन is started, the crank gets energy from the engine in the form of jerk. To avoid this jerk, we use a flywheel which is connected to the crank. So greater the moment of inertia of the flywheel, more steady will be the motion of crank. So thus, to increase the moment of inertia of flywheel greater, it is made heavy at the rim. इसके बाद जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से कि वाई इज़ अ राइफल बैरल राइफल। अब यहाँ पे राइफल से मुराद है बंदूक, बैरल होता है बंदूक की नाली, और राइफल का मतलब होता है खींचना। मतलब फायर करने से पहले बंदूक की नाली को क्यों खींचा जाता है, उसकी वजह ये है टू कीप द बुलेट इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन। So the barrel of a rifle is rifled to keep the bullet along the required direction. When a rifle is rifled, the bullet moves through the barrel and has translation motion as well as rotational motion about its own axis. This rotational motion helps the bullet to keep it along the required direction. In this way, the bullet has translational as well as rotational motion. So the total kinetic energy of the bullet is equal to kinetic energy, translation means kinetic energy linear, और ये बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस kinetic energy rotational, ये बराबर होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. So with this much kinetic energy, the bullet moves along the required direction. So therefore, the barrel of a rifle is a rifle. इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये जर्नल है। देखिए, इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड वन बाय स्पिनिंग ईच ऑन अ टेबल, एक्सप्लेन। Yes, it is possible for a person to distinguish between a raw egg and a hard boiled one by spinning each one on a table. देखिए बच्चे, when a raw egg is spun, the yolk of the egg being denser moves away from the axis of rotation. So now according to relation I is equal to mr square, the moment of inertia of the raw egg increases. Therefore, it is much more difficult to spin the egg. On the other hand, the yolk of a hard-boiled egg is fixed. So when the egg is spin, the moment of inertia does not increases, and hence it spin more easily. Question number 4 where में अक्सर आ चुका है कि why is the acceleration of a body moving uniformly in a circle directed toward the center. अब यहाँ पे बच्चे हमारा इशारा है centrifugal acceleration की तरफ. Centrifugal acceleration is that type of acceleration in which a body is moving along a circle, so direction is toward the center of a circle. तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, magnitude of velocity means speed remains constant, and that of acceleration is called what?
centripetal acceleration. So when a body is moving in a circle with a constant speed, then acceleration produced only due to change in direction of the motion of the body. This happens when force is acting perpendicularly to the direction of motion of the body. Such force is called centripetal force. Centripetal force is that force which compels a body to move along a circle, which is always directed toward the center of the circle, and since the acceleration is produced in the direction of the force, so therefore the acceleration of a body moving uniformly in a circle is always directed toward the center of the circle. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. A ball is just supported by a string without breaking. ये वो बहुत important है. If it is set swinging, it breaks. Why? देखिए, अगर हम बॉल को की जगह से सस्पेंड करते हैं तो वे डाउनवर्ड की तरफ होता है, टेंशन अपवर्ड की तरफ, इसमें हमारी जो स्ट्रिंग है वो नहीं टूटती. लेकिन जब हम इसको स्विंग देते हैं तो रस्सी टूट जाती है. इसकी वजह क्या है? देखिए बच्चे, यहाँ पे इस फिगर में अगर हम देखें, ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, वेट डाउनवर्ड की तरफ है और टेंशन अपवर्ड की तरफ है. तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे रस्सी टूटने का खदशा नहीं है. लेकिन अब जब इसको स्विंग देते हैं तो इसमें हमारे पास एक और फोर्स वेट के साथ आती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इसी वजह से रस्सी क्या हो जाती है? टूट जाती है. तो सुने, व्हेन अ बॉल इज जस्ट supported by a string without breaking, it is in equilibrium condition. So under the action of two equal and opposite forces, the weight W and the tension in the string is equal to T is equal to W. So when the ball is set up swinging, then the tension in the string play the role of centrifugal force, but the centrifugal force thus produced. So from according to Newton's second law, will add up with the weight of the body and will cause the string to break. तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल कंडीशन लगा सकते हैं कि टेंशन is greater than the centrifugal force plus weight of the metallic ball. Question number 6. An insect is close to the axis of a wheel. If the friction between the insect and the wheel is very small, describe the motion of the insect when the wheel start rotation. तो अगर इसके दरमियान देखिए बच्चे, एक इंसेक्ट है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पंखे के व्हील पे बैठी हैं. जब वो रोटेट करता है और उसके दरमियान उसकी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत कम है, तो वो भी एक मोशन के साथ वहाँ से निकल जाएगा. लेकिन अगर इसके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो वहाँ से मूव नहीं करेगा. अलॉन्ग द डायरेक्शंस ऑफ द व्हील वे उसी के साथ रहेगा. सो रीज़न है, द फोर्स विच टेक the insect to the wheel is the frictional force between the insect and the wheel. But as the wheel start rotation, more frictional force is needed by the insect to provide it a required centripetal force such that friction हमारे पास होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास बराबर होता है mv² divided by r. But since we are given in the friction between insect and wheel is very small, so insect will not be able to make itself stick to the wheel as it start rotation. So the insect will fly off in the direction of tangent to the wheel. ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये भी बच्चे इम्तिहान में आ चुका है. एक्सप्लेन हाउ मेनी नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज देयर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट. सबसे पहले सैटेलाइट्स आर दोस ऑब्जेक्ट विच ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऐसा सैटेलाइट है कि इसकी टाइम पीरियड हमारे अर्थ की टाइम पीरियड कितनी होती है? 24 आवर. अब एक्सप्लेन हाउ मेनी नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट are required for global stationary satellite coverage of TV transmission. So the minimum number of geostationary satellite required for global coverage of transmission is 3. Since one geostationary satellite
cover 120 of longitude. चूँकि complete rotation 360 डिग्री होता है तो 3 पे डिवाइड करें 120 डिग्री. So for the whole populated earth surface there must be 360 degree of longitude. So hence the whole earth surface for global coverage of TV transmission can be covered by 3 correctly positioned geostationary satellites. Explain the significance of moment of inertia and rotatory motion. अब देखिए, the moment of inertia play the same role in the rotational motion as the mass play in a linear motion. So greater the moment of inertia of a body, the greater is the difficulty in starting or stopping its rotation. So it is a measure of inertia and rotational motion and is also called rotational inertia. Using moment of inertia, I is equal to mr square, we can discuss the torque, angular momentum, kinetic energy, etc. of a rotating body. Question number 9. Why does the coasting rotating system? ये क्या है बच्चे? ये एक डिवाइस, ये एक सिस्टम है. अब slow down as water drops into the beaker. होना तो ये चाहिए कि जब हम पानी को नीचे फेंकें इस सिस्टम से तो इसकी स्पीड इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये डिक्रीज होता है. अब ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? देखिए बच्चे, द कोस्टिंग system works according to the principle of law of conservation of angular momentum, which state that in the absence of any external torque, the total angular momentum of the system always remains constant. Mathematically, L is equal to I omega constant. So this implies that I is proportional to 1 by omega. So as the water is drop into the beaker, its mass or moment of inertia will increase it. So there, by decreasing its angular velocity to keep angular momentum constant, this is why coasting rotating system slow down as water drops into the beaker. के बाद है क्वेश्चन नंबर 10. ये भी जनरल क्वेश्चन है. ये है रियल एंड अपेरेंट वेट पे. A body will be weightless when the elevator falls down just like a free-falling body. So for downward motion of an elevator, the tension or normal reaction is given by T is equal to mg minus ma. Now when the elevator in the left fall down just like a free-falling body, so यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करें तो टेंशन हमारे पास 0 आ जाएगा. सो ये इक्वेशन शो करता है कि व्हेन द एलिवेटर फॉल डाउन फ्रीली देन द apparent weight of the object will be 0 such that the body will be weightless. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11. So when a tractor moves with uniform velocity, its heavier wheel rotates slowly than its lighter wheel. Explain. अब इसकी वजह क्या है? इसकी जो मेन वजह है वो डिपेंड करता है रेडियस पे. सो देखिए बच्चे, व्हेन अ ट्रैक्टर मूव्स विद अ यूनिफॉर्म velocity, its heavier wheel rotates slowly than its lighter wheel. This is because of radius of the heavier wheel is quite larger than the lighter wheel. If r is the radius of the heavier wheel and r is the radius of the lighter wheel, so then the distance covered by each wheel is equal to the circumference. So the distance covered by heavier wheel in one rotation is S1 is equal to 2 pi r. The distance covered by the lighter wheel is one rotation is 2 how much? 2 pi r. हम जानते हैं कि r is greater than r. So in one rotation the heavier wheel cover greater distance than the lighter wheel. So therefore when a tractor moves with a constant speed, its heavier wheel rotates slowly than the lighter wheel. So thank you student. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे
is chapter K, MCQs or numerical.